Hello people, I am Jaby Koay, joined by Achara KIRK. What's up? We're looking at a SLAYY point video. This one is called When Indians Use Photoshop. So this one was of great interest to me. So thank you SLAYY point for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. Very much looking forward to it based on the title, based on the subject. I'm sure there's gonna be a lot of ha-has involved here. So here we go. आप क्या करवा रही हैं? आउटडोर शूट चाहिए था। भाई आजकल सारा आउटडोर इंडोर ही होता है, तो बस पोज दो यार। हाँ ये सही है। अब एक ताजमहल पोज। हेलो ताजमहल मतलब ये वाला पोज। तुझे बनने की जरूरत नहीं है, ताजमहल बना। अब एक स्टड पोज दे। स्टड बोला है, भूखा मगरमच्छ नहीं। गाड़ी बन, ठरकी। तो ये सब में तो भाई एकदम नेचुरल है। अब एक लास्ट टट्टी पोज। अबे ये कैसे करूं? नहीं इसके लिए बस फोटो देखते हैं। करीना के साथ क्यों नाच रहा हूँ मैं? अबे ताजमहल डालना था, मच्छी क्या पकड़ा के साथ? पड़ोसन की हेलो जी। अबे डिटर्जेंट पोस्टर में डाल दिया यार मेरे को। यहाँ मैं बंदरों से केला मांग रहा हूँ। हेलो कंज्यूमर कोड आई केस लिखना। यही तो हाल कर दिया फोटोशॉप ने। घर पे बैठे बैठे कोई भी फोटो बना लो। अब 10 साल पहले क्या मैं शास्त्री जी की तोन बन सकता था? नहीं, बट अब मैं बन सकता हूँ। कई बार तो मैं और राजेश सर विमल भी 1/2 कर लेते हैं। इन्हीं शक्तियों का बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लौंडे, जो बड़े ही चीप पोज और घटिया फॉन्ट के साथ होशियारी मारेंगे। इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। ओहो 10 साल के पप्पा जी, दिवाली खत्म हो गई भाई, अब रख दे खिलौना। ऐसे ही तो डीपीआर लगा के कर रहे हैं लौंडियाबाजी आजकल के नन्हे मुन्ने। सनशाइन इन अ बॉटल। अरे बाप, इतनी धूप। दिसंबर में गर्मी आ गई यार ये फोटो देख के। पता चला है कि आजकल जादू को भी धूप की जगह बोतल वाला सनशाइन ही पिला देते हैं। If you like me then raise your hand. If not then raise your standard. यार मेरा स्टैंडर्ड ना फर्श पे ही ठीक है, और अगर कुछ उठाना है ना तो ये देखने के बाद भगवान मुझे ही। Sorry girls, mom said no dating under 18. ये क्या डाला तूने फेसबुक पे? लड़कियां मिल नहीं रही तो मम्मी को बदनाम कर दो हैं? सीधा सीधा ये बोलना कि लड़कियां जो सस्ता हिमेश बुला के भग लेती है। तुझे तो अभी मैं सॉरी कितने पैसे हुआ? जीसस। अब ये कैसा थूका हुआ सा फॉन्ट है यार? यहाँ ढंग से लिखने का चालान करता है क्या? सफेद सफेद पता नहीं क्या टपक रहा है। In my eyes I can see you, but in my closed eyes I can feel you. यार मूछे तो आई नहीं, फीलिंग पहले ले लेनी है इन्हें। Pain is the only thing that's telling me I'm still alive. बाप रे कौन है? क्या हो गया? अबे छुटके, ऐसा क्या हो गया? डोरेमोन का स्पॉइलर बता दिया किसी ने, या लूडो में हार गए? फिर आते हैं वो लोग जो अपने दिल की तमन्नाएं पूरी करते हैं फोटोशॉप इस्तेमाल करके, जैसे गुलाब का फूल बनना, डायनासोर बनना, महंगी गाड़ी पे पसरना, अपना सर काट के उसका गुब्बारा बनाना, और फिर सेलिब्रिटीज से मिलना। भाई क्या है ये? सेलिब्रिटी के साथ हो तो थोड़ा एक्साइटमेंट वाला एक्सप्रेशन तो दे दो। 4 दिन से क्या मुश्किल समय में आपको सोनाक्षी की नहीं, चूरन की जरूरत है। आपकी बीवी अब उनका चेहरा ही बदल दीजिए। नहीं ये मत करना, ये हीरोज की कमी नहीं है अपने पास। लेडीज वर्सेस शिवम भाई, गणेश ज़ारा। हम भी बनाएंगे गजोदर रतन धन सॉरी चिल्लर पायो। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। आई लव यू पूजा। राइम भी नहीं कर रहा है यार, प्यार तो ढंग से जता लो। साइड में लिख दिया प्राइवेट प्लेन, क्योंकि एयरफोर्स वालों को तो यही काम बचा है ना। ऐसे मजनू को प्लेन के ऊपर टशन में बिठा के उनकी लैलाओं तक डिलीवर करे। डिस्कसिंग अबाउट सेफ्टी ऑफ हैंडसम बॉयज इन दिल्ली। हाँ सेफ्टी तो चाहिए ही होगी। ऐसा फोटोशॉप देखने के बाद निर्मा से धुलाई करने जो आ रही है पब्लिक। कुछ लोग फोटोशॉप से इजिप्ट घूमा है, पर ये है किधर? मतलब खुद को कहीं भी बिठा सकते थे, लेकिन कहाँ बिठाया? 1 किलोमीटर दूर, वो भी हगने के पोजीशन। ये मैडम खिलाते हुए लोगों को हगते देख मॉर्निंग वॉक कर रही है। हम मॉर्निंग वॉक में सनराइज एंजॉय करेंगे, फूलों की खुशबू और पक्षियों की आवाज। पर इन्हें तो भाई रेत पे जो ये डोनेशन दिया जा रहा है ना, इसी को देख के मजे आ गए। इनका तो बाइक के साथ साथ पूरा आंगन स्टंट मार रहा है। और ये कैसा शेप आया है भाई? फोन पे बैठ के पिछवाड़े से क्रॉप किया है क्या? फोटोशॉप के साथ लोग कहानियां भी बना लेते हैं, जैसे इस बंदे ने आलिया को तौलिए से ढका, जिसके बाद उसे मिली एक किस, और वो बजाज डिस्कवर लेके चांद पे चले गए। वाह वाह
ऐसे ही तो राइटरों की कमी है देश में, इस पे तो पिक्चर बननी चाहिए। तौलिया दे के चले चांद पे चुम्बन लेके। अरे वाह, पायरेटेड सिंघम, जेंडर तो सही चूज कर लेते भाई। कमर लचका के कहाँ चल दिए। सुपरमैन भाई, इतना टेंशन। ये भाई सुपरमैन है जिसे दुनिया को जाने के साथ मम्मी ने धनिया लाने का काम दे दिया। जस्ट सर्वाइव फ्रॉम अ प्लेन क्रैश। फूल पिक, मतलब इससे खौफनाक बैकग्राउंड नहीं मिला था फूल बनने के लिए। आग लगी पड़ी है, लोग मर रहे हैं, और ये भाई को यहाँ पॉकेट में हाथ डाल के जॉन अब्राहम बनने से फुर्सत नहीं है। मैं ऐसे किसी डूबते इंसान के सामने कुत्ता बनूंगा तो थोड़ी ना अच्छा लगेगा यार। ऑडी की कार और राजेश का प्यार हर किसी के नसीब में नहीं। थैंक यू भगवान, जो मेरे नसीब में राजेश का प्यार नहीं। पर अगर आप ऑडी दे रहे हो तो वो मैं ले लूंगा। ऑडी के साथ राजेश फ्री आएगा। छोड़ो यार, वो भी नहीं चाहिए ऑडी। तो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पीछे क्या है, तो ये है नॉइस कैनल वायरलेस ईयरफोन्स जिनका नाम है शॉर्ट्स। तो अगर आपको I was actually wondering that. I saw that. I'm like, what is that? दे दिया, वहीं जाके चेक कर लो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना है तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। We'll see you guys in the next one. Where do they dig these up? Is what I want to know. I have no idea. Well, they obviously pissed off one of the people because the face was blurred. Yeah. They had to. That was not blurred in the making of the video. That was blurred after it had been uploaded. Yeah. Because that's something you do when, that just happens sometimes. We've had to deal with that. And that guy obviously threw a fit and asked SLAYY Point to block them or something Or like that. take down the video, and it's like, I'm not taking down a video, but I will blur your face, sir. Right. So anywho, I was thinking also at the same time while watching this, like this is something that I do all the time nowadays to make my thumbnails, Oh. Or I just superimpose my face onto something or superimpose your face onto something. Yeah. But I mean, I suppose the difference is that we're not taking ourselves seriously. Whereas, I mean, who are you trying to convince? Who are you trying to convince when you put yourself on the moon? Like, who are you trying to convince? Or at least like cut yourself out better. Like that one guy who like did a very bad job of cutting himself out and then just pasting himself on the picture. It's like, See that? Okay. if you're gonna go to that effort, like just do it right. That's where I wonder if this is serious when, like, for the people who did those photos, if they're really trying to pass this off as legitimate. That's when I wonder, because it's so obvious. It's like those guys who Photoshop their muscles, right? And they make this like bigger. You know what I'm talking about? Are we just like trying to show off how big what I was trying to do was have it so that like in Premiere, I'll like blow it up with that balloon effect that they use sometimes. Oh, I see. I was gonna make it look bigger, but you kind of ruined my joke. Anyway, what I'm trying to say is, sometimes you have those guys who do that, or women who like Photoshop their butts and their stomachs and whatever, and you see like the dog in the background looks weird because they didn't Photoshop it very well. They just used the liquify tool in a weird way. Sometimes people try to pass this stuff off as real. I don't think that guy with the motorcycle could have possibly been trying to pass that off as real. That's just like who would be convinced of that in 2 seconds? It's like, come on. I mean, who's proud of that? You know what I'm saying? Like when your mom walks into the room and sees that you're, flying off of a ramp, is she gonna go, oh, when did you do that? When did you fly off a ramp on your motorcycle? No one's gonna think that, right? Yeah. So that's why I'm just wondering where they dug these up. Maybe they just know where to go and look. The other possibility is that this got submitted to them by fans. Yeah. That's very likely. Because some people just like to get made fun of. It's like, it's an honor to be made fun of by SLAYY Point, is what it comes down to. Just like Carrie Minotti. It's like, if you get roasted by Carrie Minotti, that's an honor. I also like the way they roast each other though. Right. Because like, it's very self-deprecating. Yeah, in the beginning, like all the stuff that she was getting him to do and basically saying like, oh no, I don't need to get a pose of you trying to poop, like your face alone is fine. And then the face he made, I was like, yeah, that's literally a poop face right there. And that really got me. But one of my favorite jokes was the mum joke, where like she's throwing the shoes at him, but it's like the most ridiculous amount of shoes you've ever had thrown at you. That killed me. I loved it. So funny. It was an egregious amount of shoes. Yeah. The posing with celebrities one, my favorite one was the one with the guy with Sonakshi Sinha when he had the constipated face. It's like, of all the faces you could have chosen to plant onto this poster, you chose the one where you looked like that. And it almost makes me inclined to think, again, I'm like, maybe that was deliberate because he thought it was funny, like the way we do with our thumbnails. Maybe it was on purpose, because why would you choose, like, I'm giving too much credit to the people who made the photos, I guess, but like, why would you choose that photo? It was the best one he took that day. That is hard to believe.
You couldn't make a face like, hey, look who I'm with. You know? I don't know. Have you ever looked at a girl's camera when she's trying to pick a selfie to post on Instagram, and it's like that one picture was number 50 of a bunch of selfies that just looked like crap. But maybe that was the case here. Yeah. He just said that maybe- one picture is like, you know, it's the one that made it into the egg. Like, all the other sperm couldn't make it. I just fucked it up. I know what you're saying though. There's like a lot of leftovers that didn't make it. They didn't make the cut. You know, you have one good one. That's all you needed. Yeah. I think the thing that shocks me the most is the brazenness, the audacity of some of the messaging in this stuff. Like something about raising your standards. What did the guy say about himself? If you like me, then raise your hand. If not, then raise your standard. It's such an audacious thing to say. Like you think you're that cool. Yeah. Confidence is a good thing. Overconfidence. You reach a point where it's a bit much. You guys, thanks so much for hanging out with us. Hopefully you enjoyed some of that. And thank you, SLAYY, for allowing us to react to this. Very much appreciate it. Check out Achara KIRK on her social media. YouTube.com/Achara is where she has YouTube videos of herself doing strange things that you can laugh at. Subscribe here if you haven't already. Check out other reactions, reviews, short films, vlogs, and interviews. I'm Jaby Koay. This is Achara KIRK. Peace out.